अनाउंसमेंट होगा, आपको स्टेज पे जाना है। ये लड़की की फोटो है आपके पास? अगर ऐड के साथ आप फर्स्ट टाइम देना है तो वो पूरा भर के सामने रिसीव करवा रहा है। ठीक है, वही भर लीजिए। आपसे कुछ देर में जाने करने की शुरुआत होने वाली है। प्लीज रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन फ्री होगा। एंड एज रजिस्ट्रेशन काउंटर प्लीज यहाँ लिस्टें तैयार हो गई है। आप उन्हीं लिस्टों के आधार पर हम आप लोगों को बुलाना शुरू कर रहे हैं। आगे सूचना के हम आपको बताना चाहते हैं हमारे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस के बारे में। यहाँ प्लैटिनम प्लस है 13 महीने के लिए 4,250 रुपये में, फिर है गोल्ड प्लस 4 महीने के लिए 2,250 रुपये में, जहाँ पे आप 400 अन्य व्यक्तियों के कॉन्टैक्ट के साथ साथ प्रिंट ऐड पाएंगे हमारे अखबार में। हॉट सीट पर हम आपको एक माइक देंगे। जब आप यहाँ पर आए तो प्लीज़ ज़रा लाउडली तेज से अपनी बात बोलें ताकि बाकी लोग आपकी बात सुन सकें। टेक्निकल पीपल, कैन आई हैव अ माइक? अब ज़रा कोई लड़के को बुलाते हैं। सीरियल नंबर G1, राजीव वालिया। राजीव वालिया, वेलकम सर, नमस्कार। Hi, I'm Rajiv Walia. My name is Sujata. I'm Seema Sharma. Jinder Jaiswal. Sandeep Arora. Namit Sheikh. Akanksha Chawla. And I came here for the matrimonial purpose of my daughter in question. Date of birth is 30th June 1984. Place of birth is Delhi. 11:55 रात का उसका जन्म है। I am 25 years old. She is not short, but she is not very tall. My height is 5'1", complexion is fair. Simple, Good looking. beautiful, smart, slim. Good nature. She looks more than 10 years younger to her age. Pure vegetarian है। I'm a non-smoker. I'm just a very simple and fun-loving person. Believes in modern outlook with respect to traditions and values. मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। Basically, I've had all convent education. Hobbies, drawing and painting. Son is also international swimmer. And then he was posted to USA. लगभग 3 लाख का पैकेज है उसके पास। 6 लाख plus का पैकेज है। 25,000 per month. She owns a car. We don't want any dowry. And I'm also like to point out that I'm Anshik Manglik. No problem. Of course, I almost forgot to mention my 4 of my maternal uncles. They're all settled in the US. They're US citizens. तेरी एक नजर ने मार डाला है। कहाँ मिठाई? Getting married nowadays is like advertising yourself. So it's like the girl's the product and the guy's family is out there to buy it. It's been an interesting journey searching for guys because मेरे रिश्तेदार of course बहुत टाइम से पीछे पड़े हैं. My mom has been surprisingly the cool one in the family. पर हाँ, रिश्तेदारों को बहुत प्रॉब्लम होती है. So they'll call me up and call up my mom. कोई लड़का मिला, कब शादी कर रहे हो, कब शादी कर रहे हो, कब शादी कर रहे हो, when are you getting married, when are you getting married? क्यों नहीं कर रहे हो? शादी कर लो, शादी कर लो. शादी नहीं कर रही है ऐसे कैसे? अगर करनी है तो अभी कर, और नहीं करनी है तो फिर बता दे, फिर हम लड़का नहीं ढूंढेंगे, फिर नहीं होगी उसकी शादी जिंदगी भर. कैसे मैंने कोई पाप कर दिया शादी ना करके, पहाड़ टूट पड़ा, अगर देवी का शादी नहीं करेंगे दुनिया बच्चों ना बंद हो जाएंगे, दुनिया नहीं चलेगी टाइप्स. सो वहाँ पे केस में आई हैव आंसर्ड बैक टू देम कि आंटी कर लूँगी, क्या टेंशन है, मेरे घर वालों को टेंशन नहीं है. सो दैट्स बीन अ टिपिकल रिप्लाई कि मेरे घर वालों को टेंशन नहीं है. सो या I'm a different character in my own self, I must say. I like spending time alone. I'm a loner that way. But then I've got a dual personality. I have different mood swings.
But yes, I mean, who doesn't need somebody to share things with? So, I mean, I would love to go out alone, but किसी को shopping bags पकड़ाने के भी तो कोई होना चाहिए. So I guess why not? I started off this entire process of meeting guys because I thought, okay, now is the time when I want to settle down. But I did not want to give in to anybody's pressure. It's end of the day, it's my life. So अगर मैं अभी प्रेशर में आ जाऊँगी, okay, next बच्चे कब करने का प्रेशर है, एक बच्चा होगा, दूसरा बच्चे का कब प्रेशर है, तो मैं क्या पूरी जिंदगी दूसरे के प्रेशर में जाऊँगी. So I am independent. I have done things my way, and I don't think there's anything bad about it. टैनिंग काफ़ी कम हो गई ना स्क्रब हाँ करने हाँ के बाद बहुत में? नेट हो गया बिल्कुल, जैसे गैप हुआ था हाँ। वो मेकअप हो गया था. मैट्रिमोनियल पर्पस के पाल लाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. पढ़े लिखे हो ना लिखे हो, जॉब करते हो ना करते हो, बट येस पाल लाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आई मीन द फर्स्ट थिंग दैट पीपल आस्क फॉर इज योर फोटोग्राफ. So either you go to a Lakshmi studio and get a photographs clicked and make sure that you look something which you otherwise don't. Otherwise, obviously, there have been instances when people just look at the photograph and they say, all right, no. You know, maybe because dark color hai ya pimples dikh rahe photographs mein. Obviously, it's not airbrushed or anything, so I'm not a model. So I look the way that I look, and I'm comfortable in my own skin, but apparently other people are not comfortable with the way I look. So it's important that I look after myself and, you know, take care of my hair and skin and whatever. This one's fine, thank you. It is extremely frustrating and irritating, I would say, to be rejected on the basis of looks. It just does not make sense at all to me. I mean, I try to keep my mind open about it, and, you know, my mom tells me it's okay, you know, that's how everybody does, you know, that's how the society works. It's Indian society and everything, and every parent wants the best for the kid. But what's the best? I mean, what's the definition of best? I mean, just on the basis of looks, कमौली का टाइप की अगर बहू घर पे आ जाएगी, she looks good यार, so वो चलेगी क्या? बट तुमको नेचर भी अच्छी चाहिए, तुमको लुक्स भी बहुत अमेजिंग चाहिए, सबको चाहिए. लाइफ में सब कुछ तो नहीं मिलता, तुम अपने घर में तो देखो एक बारी. सो इट गेट्स वेरी इरिटेटिंग एंड सिंपली बिकॉज सर फोटोग्राफ्स देख के रिजेक्शन हुआ था. अब ठीक है, अब ठीक है. लग रहा है ना वहीं पे? हाँ, बिल्कुल लग रहा है. तो मम्मा आपने बाल बनवा दिए हैं ना मेरी सारी पिक्स में, कैसी सी आई है? शादी के व्यू पॉइंट से तो ये बेस्ट रहेगा ना, बाल बनवा के कितनी अच्छी लग रही है. हाँ, मेरे दांत नहीं दिखने चाहिए बस, वो वाली फोटोज बिल्कुल नहीं. Desirable is not achievable, achievable is not desirable. The moment desirable becomes achievable, it's no more desirable. You know what I'm trying to say? At the moment, my life is absolutely full freedom. No answerability and no liability at all. Even my mom, she doesn't call me, even if I come late at night. So that's the kind of
lifestyle having at the moment. So it's quite convenient and enjoyable. Anushka, how many times have you been asked to shoot eating Mrinal? A zillion times. And what has been your answer? I don't know. सब कुछ ट्राई कर लिया, मतलब शादी.com, जीवनसाथी.com, फ्रेंड्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, बट अभी तक कोई बात बनी नहीं है. मैंने अपनी पिक्चर लगाई हुई है, बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि सारे जो इंटरेस्ट हैं वो 35 प्लस से हैं. मतलब गर्ल्स, आई थिंक 1 or 2% ऑफ द गर्ल्स वुड बी हु आर लाइक इन अर्ली 30s, अदरवाइज आई गेट ऑफर फ्रॉम either divorcee or separated or in their late 30s or early 40s. It doesn't work for me, honestly. I'm 38. I'm going to be 38 in December. I'm 37 at the moment. And see, if girls are in their late 30s or early 40s, it doesn't really bother me. But what bothers me about their physical appearance. Girls are not too conscious about their health these days, right? I mean, I get girls who are in their late 30s and they look like aunties. You know, I mean, it doesn't work for me. I mean, if they're in the late 30s, it's perfectly fine, but they have to take care about their physical appearance. After marriage, what happens is perfectly fine, but before marriage, the package has to be good. I am 5'9". I'll prefer a girl who's around 5'2", 5'3". Should be health conscious. If she is into sports, is nothing like it, because I'm a sports freak. Okay. If she doesn't play anything, it's perfectly fine. If she's hooked to gym or something, some physical activity. If she's fair, is good, no doubt. Slim, good sense of humor, good to talk to. Should not be serious in life. I mean, I don't like people who are very serious, you know, or who give too much of gyan. It doesn't really work for me. If you really ask me from the core, then I would say physical appearance is the most important thing for me at the moment. She should be good looking. She has to be good looking, no doubt. मैं गाती भी हूँ, रिश्ते भी कराती हूँ. हम लोगों की समझ लीजिए चौथी पीढ़ी, तीसरी चौथी पीढ़ी इसी उसमें डली हुई है. किसी शादी में मैं प्रोग्राम करने जब जाती हूँ, किसी ने मुझसे पहले से जैसे कह रखा है कि वहाँ पे तुम जा रही हो, दिल्ली जा रही हो या अलीगढ़ जा रही हो, कोई लड़की देखना अच्छी सी तो बताना मुझे.
देने के लिए तो बहुत कुछ लोग दे देते हैं। ये तो उनके दिल पर है, दिल के ऊपर है या मर्जी हुई उनकी, कोई चीज दे दी, खुशियाँ हैं, ये तो खुशियों सोने का गिफ्ट या कपड़ा या पैसा, इस तरह कभी कभी जेवर भी देते हैं लोग, ऐसी बात नहीं। कपड़ा देंगे उसके ऊपर जेवर भी रख के देंगे, ये हमारी खुशी है भाई। अच्छा रिश्ता देंगे तो अच्छा ही काम होगा। खूबसूरती देखी, घरेलूपन देखा, पढ़ी लिखी देखी, कायदा देखा उसका, लड़की वही जो लगी, परिवार को अच्छी लगी, बता दिया। फिर लड़की वाले ये सोचते हैं कि भाई हमें लड़के का बायोडाटा चाहिए, फिर फोटो चाहिए, क्या सर्विस है, क्या कैसी आमदनी है। दूसरा, मेरे बेटे की हाइट है 5 फुट 9 इंच, तो हमें 5 फुट 2 इंच से लेकर 5 फुट 6 इंच तक लड़की चाहिए। Her height is 5 feet 9 inches. मैंने तो फीते से नापा नहीं है। And she should be at least 5'4". तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि लड़की ऐसी होनी चाहिए कि जो कि सेटल हो, Basically professionally qualified. where the boy at least can look after his own expense. My preference would be Government servant from defense forces. Second thought will be given to MNC. Must be, with the IT field also. Getting good salary also. Lawyer, of course, lawyer is preferred. We are not so keen she should be working. priorly you should be religious, With a warm and understanding heart. Non-smoker or responsible, teetotaler ho. moderate, Should have high moral values. not very religious, who understand human relation actually. and the other criteria is that the girl should be willing to live in the US because Vimal doesn't want to come back to India. Let me tell you one thing about my brother. He was born in India. We traveled outside the country when we were about 2 years of age. After then, we've been born and raised outside the country. I remember one of my uncles got married a few years ago, and they had some middleman to do the entire thing. Now, the corporate thing has come in, matchmaking, and I think it's a wonderful idea because you have someone who's already done the profiling, someone who's already looked into a few other things, and that's when they've got the matchmaking done. We're looking for someone more moderate, someone with new ideas, someone with an orthodox little background, and trying to collaborate the entire thing. We're looking for someone who's more valued, a family valued person. We're looking for primarily an Indian. ये वो नवग्रह पूजा हो रही है मुझे, इसमें वो बीज वगैरह बोते हैं। हाँ, फिर रोज करके हाँ वेरी प्रीटी। एक कस्टम होता है जिसमें शादी से पहले लड़का लड़की शक्ल नहीं देखते हैं, तो यहाँ पे पर्दे लगा दिया था इन्होंने। फिर मेरा भाई मनोज के पैर धो रहे हैं। अभी भी हमारे वो कस्टम्स में लड़की को गाय बना देते हैं, रस्सी बांध दिया, बाप रे बस मजा आया था, मैंने जोर से बाप, वो कहते हैं ना गाय को खूंटे से बांध दिया, रस्सी तुम्हारे हाथ में दे दी। मैंने कहा लड़की देना, मगर गाय दे दी मेरे को। ये बहुत अच्छी है, ब्लैक एंड वाइट में सब कुछ अच्छा है। Manoj knows Vimal very closely, what his choice is, and I have been more of a friend to him than the typical bhabhi kind of a relationship. Mamiji and Dadiji, both of them are looking for a girl as well. So our responsibility is to just shortlist based on certain criteria that he has given us, and the decision is going to be his totally. He is the one who has to make a decision that he wants to move ahead and make a commitment of marriage. We've gone to all the matrimonial or those marriage bureaus take place, and they'll conduct little programs that people from different communities come together.
We've been to those. We've even been to one of those Arya Samaj Mandirs. They conduct those marriage programs. We've been to those. We've been to Hyderabad as well. They conduct these at least once a year. We've gone to those. We've spread the news around all over our family members or anybody that we know, friends. We've spread the news around. And we've been looking around. Almost every Saturday and Sunday, this is what we do. Thank you so much. G38 Pranjal. G39 Nitin Puri. G41 Ravi Kumar. Hello everybody, I'm Dr. And how long? To settle abroad. So would you like to exchange details with us? यहाँ पर आपको रेजिडेंस हमारा द्वारका में है. द्वारका में एक घर हमारा वहाँ है, एक घर Hello, नमस्कार everybody. छतरपुर में है. आप हॉरोस्कोप वगैरह में बिलीव करते? अगर आपको मैच कराना है तो करा लीजिएगा. टाइम मैं आपको बता दूंगी. मैं फोन करके आपको that's my number. That's my husband's number. सर पूछना था, आप अपनी फैमिली में किसी के लिए मैच देख रहे हैं अभी? We are about 200 people here and we are totally into matrimony. Regularly I'm sending proposals also. Last time also there was one profile of Rajesh Gupta. MBA फाइनेंस में किया हुआ है न्यूयॉर्क से. सर यहाँ पे एक पेरेंट्स मीटिंग करा देती हूँ और वहाँ पे बच्चे मिलते हैं. बट अपनी मदर से मेरी बात है जो बोल रहे हैं वाली अभी फ़ोन पे बात करेंगे फिर अट्रैक्शन वगैरह हो जाता है फिर बाद में प्रॉब्लम आ जाती है. But unfortunately Ritu didn't like his photographs. इस पैकेज में हम लोग चार्ज करते हैं 1 लाख रुपीज़ एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, 1 लाख रुपीज़ जब केस मैच्योर हो जाता है हमारे पास. We are very personalized in our services and we are very professional. We talk about the class, the background, the status and everything. इसमें प्रीमियम वाली सर्विसेज सारी सेम रहती हैं. एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि जो फैमिलीज आपको ठीक लगती हैं उनके घर पे हम लोग जाते हैं, उनका स्टेटस देखते हैं और उसके बाद एक इंसाइट क्रिएट करके देते हैं जिसमें कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में या उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं और फैमिली बैकग्राउंड है सारा एक इंसाइट क्रिएट करके देते हैं हम लोग उसमें. जी. दैन उसके बाद हम अदर सोर्सेज से भी आपके लिए. Yes, we do have people like coming from abroad and they are non-Indians and they want to get married to an Indian girl. Now when we ask them why do you want to marry an Indian girl, because they say that they're looking for a sustainable marriage and they feel that Indians are very sincere and they're very dedicated, you know, that's how they want to go into that. See, we have people from Russia, we have people from Italy, and we have people from Africa. A lot of Indians are there, but then they feel like they are a girlfriend material, but we are looking for a wife, you know, who's leading, you know, like a sincere married life and giving us children, and as a family, you know, we can go ahead. That's what. जी सर, हैव अ नाइस डे. बाय. सवेरे 11 बजे घर से निकल जाता हूँ. जहाँ जहाँ किसी के बुलाया होता है तो वहाँ जाके देखना होता है. लड़का लड़की बायोडेटा वगैरह लेते हैं, घर बार देखना होता है. अर्जुन प्रतीक डैडी का नाम बनवारी लाल. शौक था मेरा, मेरी दुकान कपड़े की थी चांदनी चौक में, तो वहाँ भी जो भी रिश्तेदार वगैरह कोई आते थे तो मैं उनके रिश्ते करवा दिया करता था. आगे अब उसकी एक हैबिचुअल रिटायर्ड लाइफ में हो गई. बीकॉम ही है ना? जॉब कितने कर रहे हैं? एशियन इंस्टीट्यूट. हैं? एशियन इंस्टीट्यूट. 8 जनता मार्केट. पंजाबियों में भी करवाए हैं, लोकलों में भी करवाए हैं, इंडिया से बाहर भी भेजी हैं बच्ची, मगर जानकारी के बगैर नहीं.
जैसे साउथ दिल्ली में चले जाइए, साउथ दिल्ली की हमें गारंटी नहीं होती कि इन बच्चों का क्या पोजीशन है। ऐसे ही वेस्ट दिल्ली भी है, इस वेस्ट दिल्ली में भी जो पॉश कॉलोनियाँ हैं उनके बच्चों का कोई भरोसा नहीं है कि वो कहाँ क्या करते हैं। तो थोड़े हमें जब तक डीप नहीं जाना पड़ता है, जब तक किसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, कहते जानकारी अपनी हो तो आगे बढ़ो। हाँ, अर्जुन की एक फ़ोटो दे दो और अर्जुन की शादी मैं अपने हिसाब से ऐसी जगह करा दूंगा कि जहाँ क्या पता उसका हाथ पकड़ ले, परमात्मा करे उसकी लाइफ। फोटो उसकी देख लो कौन सी अच्छी है। नहीं, लगभग हमसे कई पूछते हैं कि भाई क्या लेते हो, तो हम तो यही बोल देते हैं कि अगर तुम्हारी श्रद्धा देने की नहीं है तो हम नहीं भी लेते। तुम्हारी श्रद्धा जो है उसके हिसाब से आप शादी, वो कई कहते हैं जब शादियों में इतना खर्चा करते हैं हमें आपको देने में क्या तकलीफ है, तो कोई वो लिमिट नहीं है। चलो हम अर्जुन का परमात्मा करे जल्दी से जल्दी काम हो और सही हो। बिल्कुल, आजकल ज़माना है कि अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए, तो वो अपने पैरों पे स्टैंड भी हो जाए और उसकी इच्छा जो कोई आज कसर खाए बगैर कोई काम होता नहीं। देखिए जी, मीटिंग जैसे आदमी होता है हम वैसे ही कराते हैं। एक ज़रा अच्छा परिवार है, मीडियम परिवार है तो रेस्टोरेंट में भी करते हैं, और अच्छे आदमी हैं तो आगे अपने घरों पे भी करवाते हैं। एक नॉर्मल आदमी होते हैं उनकी मंदिर गुरुद्वारे में भी करवाते हैं। लड़कियाँ आजकल मना करती हैं हम मंदिर गुरुद्वारे में नहीं जाएंगे, रेस्टोरेंट वगैरह में, पार्क वगैरह में चले जाते हैं। कोई भी मंदिर हो, लड़की हील वगैरह उतार के जाएगी, उसके कद का पता ना लगे, इसलिए वो मंदिरों को नहीं पसंद करते। सिर ढकना होता है, उनके खुले बाल होते हैं, तो वो इसलिए मंदिरों में गुरुद्वारों में जाकर राज़ी नहीं होते। जो माँ बाप हैं जो बिल्कुल लो ग्रेड के होते हैं वो तो भले ले जाएं, आम मीडियम आदमी आज कोई भी जाकर राज़ी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पब्लिक होती है। जैसे पब्लिक आदमी कोई हो तो पता लग जाता है सबको ये लड़का लड़की दिखने के लिए आए हैं, तो नर्वस हो जाते हैं। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मीटिंग में तो जो उधर से आ जाएगा ठीक है, आपकी मीटिंग करा दूंगा। देखो जी, कपड़ा तो जो है अगर लड़की का कोई भी रंग हो उस पर रंग लाइट ही चलेगा, पिंक हो, वाइट हो, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन जो है लड़की के चेहरे पे सही आता है। डार्क कपड़ा मत डलवा के लाना, साधारण ऐसा मेकअप हो जो घर में नॉर्मल चलता है। I have met guys only in KFC till now. So if you're meeting a middle class family, you'll probably meet in KFC. If you're meeting a hi-fi upper class family, you'll go to a 7-star and you got to pay out. I'm yet to meet a family who's there on time. So everybody made us wait at least for an hour. I mean, 1 घंटा तो इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम है, उतना तो लगाएंगे क्योंकि हम लड़के वाले हैं, एंड लड़की को टाइम पे होना ही होना है। एंड जब तक 5 कॉल्स नहीं चल जाएंगे तब तक वो लोग पधारेंगे नहीं। सो वो लोग फाइनली पधारते हैं, बैठते हैं, एंड थोड़ी सी बातें होती है फैमिलीज़ के बीच में। व्हेन यू आर सिटिंग देयर, देन दे विल टेल द गर्ल एंड द बॉय टू probably move to another seat and have a more candid discussion about themselves. जब फाइनली बिल आता है तो सारे जितने टब्बर बैठे थे सबके आदमियों की, आई जस्ट रियलाइज कि आदमियों की पैंट की जेब पता नहीं कहाँ पे होती है। इट्स अपेरेंटली अ वेल हिडन प्लेस विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, बिकॉज वॉलेट उनको मिलता ही नहीं है जेब में से कभी अपने। सो दे वर अराउंड 6 or 7 odd guys in the family, एंड किसी एक को अपना वॉलेट वो ढूंढते रहे कि कहीं पे तो निकल आए, बट नहीं निकल सकता था, वो गुम गया था वॉलेट। जब फाइनली नहीं मिला, मेरी माँ को 2 मिनट के अंदर अपने बड़े से पोते के अंदर से उनको अपना छोटा सा वॉलेट मिल गया था, बट उन सब आदमियों को पता नहीं जेब में कहाँ घुसा हुआ था वॉलेट, दे जस्ट कुड नॉट फाइंड इट। सो मे बी दे हैव गॉट टू मेनी हिडन pockets in the pants. I don't know, I'll have to check one day, but they could not find it. So you got to pay. So it's not a matter of $100 or $500 or even $50 for that matter, but you got to pay because you're the girl side.
a lot of discussions when you have with the parents of the future bride, they have a lot of questions as to why somebody is not married and he's beyond 30. So a lot of people, they have preset criteria about a guy's financial condition and his family status, and only then they want to move ahead and take the conversation forward. So I just fail to understand as to why anybody would like to know what our income is. So everybody is independent in the family, everybody is fending for themselves, irrespective of the fact that we all live together when we are in India. So the very question puts me off. I mean, are you here for a business or are you here for a lifetime commitment? लेकिन जब हम गर्ल्स की बात करते हैं या गर्ल्स के पेरेंट्स की बात करते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि जो सैलरी पैकेज बताया गया है वो सैलरी पैकेज सही बताया गया है या नहीं बताया गया, एजुकेशन बैकग्राउंड सही बताया गया है या नहीं बताया गया। इंटीमेसी तो देखिए आजकल दोनों तरफ ही लोग देखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करना पड़ता है। जो इन्वेस्टिगेशन आती है उसमें लड़की जानना चाहती है कि सासू माँ की कहते नेचर्स कैसी हैं। फादर इन लॉ की नेचर जानने के बारे में ज़्यादा कहते हैं लड़कियां इंटरेस्टेड नहीं होती हैं, ना उनके पेरेंट्स इतने इंटरेस्टेड होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि अगर कहते हैं लड़के की सिस्टर है, अनमैरिड है, तो वो किस टाइप की नेचर रखती है, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह बन सकती है लड़की के लिए। और आजकल जो सोसाइटी के चेंजेस की वजह से लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके जो हस्बैंड होने वाले हस्बैंड है वो कहीं गे टाइप की उसमें मूवमेंट में ना हो। देखिए हमारे पास एक हमारे क्लाइंट हैं इज़ अ मेल, वो आए थे, वो चाहते थे कि जहाँ उनकी शादी होने वाली है और उस लड़की के बारे में थोड़ा सा उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल जानना चाह रहे थे, और ये भी जानना चाहते थे कि इन्वेस्टिगेशन में वो कहाँ मूव करती हैं, कहाँ जाती हैं, किन लोगों से मिलती हैं, किस टाइप की उनकी नेचर है, किस टाइप की उनकी हैबिट्स हैं। तो इन्फॉर्मेशन टीम से ये पता चला था कि कहीं उनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड सर्कल्स हैं, तो कुछ फ्रेंड सर्कल में हमें पता चला कि कुछ उनके नियरेस्ट और डियरेस्ट दोस्त भी हैं। तो आज हम वही देखना चाहते हैं कि वो कितने नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं। तो इसलिए हमने एक टाई में कैमरा लगा हुआ है हमारी टाई के अंदर, जो कहते हैं इतनी आसानी से नहीं दिखता, हमने उसको लगा रखा है। वहाँ जाएंगे, वहाँ एक कॉफ़ी लेंगे, उनके सामने बैठेंगे, आराम से कॉफ़ी पियेंगे, पूरी एक उनकी वीडियो बन जाएगी, उसमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एविडेंशियली प्रूफ हो जाती है। यहाँ लगाता हूँ मैं, ठीक है ना। पहले आप अगर देखें तो मैट्रिमोनियल वेबसाइट ही नहीं हुआ करती थी। आज से 3-4 साल 5 साल पहले कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट नहीं थी। आज वेबसाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स। अपना क्लिक किया, आपके सामने 50 कहते हैं प्रपोजल्स हैं, आप उनमें से किसी प्रपोजल को क्लिक करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि प्रपोजल के अंदर जितनी प्रोफाइल के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सच है या झूठी है। ये सब चीज़ें से इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया जा सकता है। Wow, I like. But then the only thing they all write is they're all good looking, they're all well cultured, they're very well educated, and they're all from the middle class, and they're all from the high middle class. Family looking for an educated businessman. I mean, So they don't want to get married in a service class, so this match is just not for us. Let me show you a few I've got in my email. Dad had something that came to his email as well. And this is a girl from the US. She's a dentist in the US. I find her pretty okay. But then there's a little space between her teeth. If you look at that, you want to look at that space?
Don't pay attention to such details. This cosmetic dentistry, you can always fix it. Yeah, however... So see, I mean, as long as the girl is educated, as long as Vimal and the girl, they find compatibility in each other, I think we should overlook such small gaps. Look at this. Life partner with whom my life fulfill and happy. What kind of happiness is that? What kind of fulfillment would she get? How do you fulfill your so life? Critical about people, Manoj. I'll show you one more. Really funny. We want you to get married. We are your friends for many years now. What exactly we should look characteristics in a girl? How should I give an example? I mean, the example of a heroine won't do with us. Some very normal person will. Like her? Will that work for you? Well, it will work for me also. Very nice. So you're listening? She works for him too. Literally, teachers. See, I said, I can't really explain that. I mean, it should click. You know, I should like her. But in the case of Simran, it clicked. What issues you had with her? Her height? Yes, of course. Yeah, have you seen your hair? Rajiv, Dare comment on someone's height? चलो height तो cover हुई थी नाप लेते और कोई problem थी और कोई problem नहीं थी. This is what I want to ask him. Rajiv, just let me know देखो और उसमें क्या चाहिए था. घंटियाँ नहीं बजी. It should click. What do you mean? Have you seen that movie? नहीं तुझे लड़की में क्या किसी को देख के कुछ होता है. घंटियाँ बजेगी कुछ होता है. Exactly. तो कुछ होना चाहिए. तो अभी तो 30 साल में अभी तक हुआ नहीं कुछ. नहीं कुछ नहीं हुआ. Remember that girl वो. Which girl? अरे what was her name? Air hostess. Air hostess one. She smokes. That's okay. You can anytime. No, I cannot. I can't. You just say her once, she will stop. No. Just try once, na. No, it doesn't work Give like that. yourself a chance. No, it doesn't work like See, that. he has a A to Z of problems with the girls. S for smoking. तो ठीक है मतलब ये भी H for height. Something A to Z. Maybe. So. Oh, that one Goa What one. fun you have? Goa. Remember that girl? हाँ, she was. I liked her. तो problem क्या थी? Problem ये थी Problem कि ये उस थी समय work कि ही we नहीं were हुआ. supposed to come back by next day, and she was working with the hotel. लेकिन तूने पहले हमें ये चीज क्यों नहीं बताई? We would have extended our stay. See, T for timing also. Slowly and slowly. A for A to age. Z. Age को कोई issue Age नहीं issue था. नहीं. Age Are you comfortable marrying a divorcee? Why? If I like the girl, I have no Why? issues. Yeah, I have no problem. नहीं? If I like the girl, I have no Are you issues. divorcee? Divorce is separated, I have no problem with A that. divorcee widow. See, you think marriage is the only... क्या तुझे problem क्या? Widow. तुझे सब कुछ चलेगा? With a child? No, not with a child. Right. Child won't work. This is not right. Why not right, huh? Just for saying, I can write down anywhere that he will not. नहीं तूने मीनाक्षी के लिए सेट किया. तूने मेरे को आके बोला राजीव वो सरगम देखो मीनाक्षी ने कह रही है बट वो डिवोर्स से बिल्कुल शादी मत करियो. याद आ गया तेरे को? मैंने डिवोर्स ही है इसलिए हाँ बट यही करियो. बोला It था. was 10 years back. It was 10 years back. बता ना. आप बता. आप I am okay Meenakshi. with divorce. You also separated also. Are you serious? No issue. That is 110%. okay for you. I have to but like for the the girl. height of 5'1" is bad for you. But why can't we be choosy? I mean, I need to understand that why marriage is so important. That you have to do it just because your family is pressurizing you to do it. नहीं, अब तो It happens a lot of times. I mean, people you do already it said कि I want to go get married because I feel lonely. at times. See, if I say today clearly that I really want to get married, no. Sometimes I'm pretty okay with my lifestyle. What is happening at the moment with me? I'm happy with my, single status. So you don't have an I'm urge to get confused. married. Obviously, there are times when I want to get married. There are times I don't want to get married. So I'm absolutely confused. Is it 70-30, 50-50 मेरे? क्या दिखाऊं? तुझे क्या बताऊं? चिंता क्या थी तेरे बारे में? At times, people don't understand that we've traveled all our lives. We are not set to one culture. Nobody can call us Indians either. All of a sudden, somebody comes back and asks you, what's your go-through, what's your caste? I have never been able to answer. How does that matter?
At least you should accept us for who we are. We earn well, we're living well, everybody is doing well in our families. That should be the last criteria and the first criteria. You know, it's also about, you know, how young this couple is, and probably they're not just here on a serious business. I really want people to take us very seriously and not just reject us outright that, you know, young, you can't make a decision for your brother. That's not true. लड़कियां मेरे को रिजेक्ट क्यों करती हैं? I think bald could be one reason. I live in Ghaziabad could be another reason. I think just 12 pass, I'm not even graduate could be another reason. I'm not really great looking or good looking kind of guy can be one reason. There are so many reasons which I understand. In my family, just me, my mom and Nani. So there's no male member. So if I say I belong to well-to-do family, that doesn't mean anything to them. From a good background, they basically mean तुम्हारे घर में 5-6 आदमी होने चाहिए. कुछ नौकरी पेशा, सरकारी जॉब में, जज हों, इंजीनियर हों, पुलिस में हो तो भी चलेगा, but आदमी होने चाहिए. Then of course, I've got a migraine problem. The guy's families at least have a problem with it, if not the guy himself. I wear spectacles. I'm wearing on that right now, but I have a number. They want somebody with a 6x6 perfect vision to check out the sun. Then on top of it, I've got epilepsy, which is under control. I just suffer from the word. I just suffer from the disease. It's just a word for me. It's controlled. I'm on medications for it and it has absolutely no side effects. But उतना सुनेगा कौन? Explain करने का time भी तो देना चाहिए. So जब ये ऑटो वाला भी टाइम नहीं दे रहा मुझे एक्सप्लेन करने का. So जब कोई सुनने को आगे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते जब तक तो there's hardly anything that I can do about it. So yes, I'm a misfit. When you're talking to the girls, they are honest about their opinions. They are honest what they like in a guy, what they don't like in a guy. Yeah? See, any girl would prefer, if she has a choice of a guy, okay, both are absolutely same, nature-wise, they are well off, everything is same, it's just that one guy has hair, another doesn't have, they'll always go for a guy who has hair. There's no rocket science in it, I guess. Grooming part, we are top to bottom. Skincare, hair care, beauty, makeup, fashion updates, culinary skills, and then personal etiquette. When you are dealing with your in-laws, how you should, can control your stress, ego, and your anger. It is just not only the biodatas. We have to work on individuals. So when they are meeting with their prospective grooms and brides, so they are more confident and selection average goes up. So you pick up your fork and your spoon. Do not make any noise with your cutlery and the cups. There are two ways of eating a sandwich. Now either we cut it like this and have one. Look at this. You put it, the fork is not like this. It's inverted, yeah, and you put this in your mouth. Okay, do not cut a very big piece. Like see now this piece of mine is quite big, so I'll have to really open my mouth really wide. So what I decide to cut it further and put it in my mouth. The girls, they are coming from bigger town also, like from Radhabad, Mehrotra, Kanpur, Lucknow. A lot of girls are coming. Be very careful about how you pick up your cup and sip the tea. It has to be very deliberate. Your cup is a little tilted. See, I can see your cup a little tilted. It could, yeah, now it's okay. It could drop. And if you feel that you may not be able to manage too big a cup of tea and you know your hand may shake or something like that, it's better for you to have half a cup of tea. Yeah, turn it around. I am targeting elite class or top-notch families when you talk about big houses and industrialists. A lot of lives are associated with them. A lot of workers are working under them. And if their marital life is happy, definitely their business also boom, which affect their lives as well. So in one good marriage can give you good society. A good society can give you a good nation.
make sure the cup is put softly on the quarter plate. You can do it very delicately and in style. Now I hope you will be a good hostess, and of course you will serve a nice cup of tea over a table to your husband also when you get married. मैं लड़कियां नहीं पटा सकता, मैं चाह के भी नहीं पटा सकता। मेरे को लड़कियों को अप्रोच करने में मेरी लिटरली फटती है, आप कह सकते हो। मैं लड़कियों को अप्रोच नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आई गेट अ सिग्नल फ्रॉम अ गर्ल। और लड़कियां भी सिग्नल क्यों देंगी, मतलब उनके लिए भी कोई रीज़न नहीं है ना। मतलब मैं शाहरुख खान या सलमान खान तो होने की, मेरे को देखते ही लड़की बोले कि पता नहीं रूम में कौन आ गया यार, मेरे को अप्रोच करना शुरू कर दे। तो इसलिए मेरी थोड़ा सिचुएशन थोड़ी सी सैड है। जितनी भी लड़कियों में मैंने इंटरेस्ट शो किया, मेरे को हमेशा रिजेक्शन मिला है। आई थिंक बाहर से तो मैं कहता हूँ कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बट अंदर से बहुत फर्क पड़ता है। स्कॉश कोर्ट में जाके 2 घंटे एक्स्ट्रा खेल लेता हूँ फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। So in case of Vimal, he is indifferent. For him, he is not there physically talking to people, so he is indifferent. So for him, it's another situation, it's another story narration that we're doing to him. So it doesn't matter to him. As long as he's not interacted with the girl, he's indifferent. I go for qualities of the girl. I mean, I would not make a judgment, I would not make a decision just by looking at the profile. I would want to meet, I would want to interact, and then make my mind up whether the girl is suitable for Vimal or not. In Manoj's case, you know, a lot of times, you know, the pictures are the main criteria, and let me clarify. He just would shoot down several proposals, which I think probably could be the potential brides. Probably she could be my potential sister-in-law. First time I got rejected and dejected, it was a different experience. I was quite surprised. Then I thought, okay, maybe that happens, you know, you got to meet a couple of guys and all, but now that it's happened number of times, 5-6 times, and that too because of no valid reason as such, you know, if somebody says, okay, our personalities didn't match or something, now that would have been a valid reason for me. But things like, you know, Dusky, you've got a migraine, you earn much more than me, dude, that's your problem, not mine. Types. So that's not really my problem. So yes, it feels frustrating. It feels extremely frustrating and derogatory, to say the least. कई बार आप अपनी फीलिंग्स को खुद नहीं समझ पाते हो, मतलब आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते हो कि आपको बंदा पसंद क्यों नहीं आ रहा है। आई थिंक सिर्फ आप फिर ऑब्वियस रीजंस ढूंढते हो कि मैं कैसे मना किसी को कर सकूं। तो हाइट कुड बी वन रीजन कि आई थॉट कि ठीक है, दिस इज द रीजन आई थिंक आई डोंट वांट टू मैरी हर। यार मेरे ख्याल से जब लड़कियां मेरे को रिजेक्ट करती होगी तो उनका भी तो कोई ना कोई रीज़न होता होगा जो मुझे बुरा लगता होगा या लग सकता है या डेफिनेटली लगेगा। ठीक है मैं गंजा हूँ, लेकिन अगर आपके मुंह पे कोई बोले कि आप गंजे हो तो बुरा तो लगता ही एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं। ज़्यादा खर्चीली नहीं होनी चाहिए। वो लड़कियों का ना देखता हूँ। I was looking for a friend primarily. वो मुझे ही देखे। बीवी जैसे गर्लफ्रेंड ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए।
नहीं तो बंदा बाद में उसको प्यार नहीं करता, दूसरे के पीछे भागता है। I don't know, rich? जो खाना भी बना ले और डिस्को भी जाए. Mature enough to handle. क्योंकि लड़कियों को भगवान भी नहीं चाहता कि उनको क्या चाहिए, सही बताया। He wants somebody who would bond with the family and be together as one. Oh, we definitely want an Indian bride. I'd like a love marriage. मैं लव करूँगा फिर अरेंज होगी वो। मम्मी पापा ने ढूंढा था, वही देख के आए थे और उन्होंने ही फाइनल किया था। खुद से ढूंढा 1 week. हाँ, नेट पे भी आज चीटिंग वीटिंग होती है, वो करते हैं। For girl, I want कि उसकी arranged marriage हो. For boy, it depends totally on him. I think also more people need to be aware of same-sex marriages and that it's possible. I want to get married, yes, but on my own terms. I want to get married when I want to get married, not because somebody is pressurizing me into getting married. शादियाँ होनी चाहिए. Marriage is a very precious thing. It's an institution to regulate indulgence. शादियाँ आसान होनी चाहिए, कम से कम खर्चों में होनी चाहिए, कम से कम मेहमान होने चाहिए, कम से कम जगहों में होनी चाहिए, कम से कम खाना होना चाहिए. होनी नहीं चाहिए. आज़ादी है कि मतलब एक नहीं तो दूसरी सही, दूसरी तीसरी सही. उसको देख लो, सलमान 42 साल, उसने अभी तक शादी नहीं करी. मेरी शादी तो 2 हो चुकी है. कहाँ मिठाई? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग शायद कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी करते हैं, बट इफ़ आई फाइंड अ राइट पर्सन देन ओनली आई एम गोना गो फॉर मैरिज, अदरवाइज आई डोंट नो. कहाँ मिठाई?